वेलकम एवरीवन टू क्यूरियस कोड। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज़रूर सीखनी चाहिए सो दैट दे विल बी हेल्पफुल टू यू इन द फर्दर पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अब तक जितना भी इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन या फिर जितने भी इंजीनियर्स को ऑब्जर्व किया है, आई हैड ऑब्जर्व दैट कि इंजीनियर्स जो होते हैं आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पीपल आउट देयर। इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, ऐसा मैंने देखा है, या फिर ये मेरी एक पर्सनल थॉट प्रोसेस भी हो सकती है। इट्स वॉट आई पर्सनली थिंक ऑब्वियसली, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी कॉन्ट्रोवर्सी ओवर इट, बट आई जस्ट फील लाइक दैट। ओके, दैट्स ऑल। क्योंकि मैंने देखा है कि कई इंजीनियर्स जॉब तो करते ही है, बट अलॉन्ग विद दैट दे डू मेनी अदर थिंग्स। बहुत सारे इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे जो कि यूट्यूब कर रहे होंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स आपको मिल जाएंगे जो स्टार्टअप्स या फिर कई और फील्ड्स जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह कई चीज़ें करते हुए आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली इंजीनियर्स अलॉन्ग विद देयर जॉब या फिर उनका जो एक बेस या फिर कोर प्रोफेशन जो होता है, अलॉन्ग विद दैट कई और चीज़ें करते हुए आपको मिल जाएंगे। एंड दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स दे गेन। क्योंकि आज का जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। आई थिंक समथिंग मैटर्स द मोस्ट इज़ द स्किल्स यू गेन। आपके पास कितने स्किल्स है, आपके पास कितनी एबिलिटीज़ है, कितनी नॉलेज है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड आज के इस एरा में आई थिंक जो सबसे ज़्यादा वैल्यूड है वो है स्किल्स। कि आपके पास कितनी स्किल्स है उनकी ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। एंड आई थिंक अभी अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आई थिंक ये एक ऐसी फेज़ है व्हेन यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग अबाउट समथिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा साइड में भी रखा जा सकता है, बट समथिंग matters the most in the beginning is that you need to know everything. Sorry, you need to know something about everything. Knowing something about everything in the beginning, that matters a lot. You need to know what are the fields out there, what are the possibilities out there. ये सारी चीज़ें आपको अगर पता हो तो दैट मैटर्स अ लॉट। एंड आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हाउ द फील्ड गोज, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ द वर्क गोज देयर, उस फील्ड में आपको क्या करना होता है। एंड यू बेसिकली नीड टू नो सम टास्क अबाउट दैट सो दैट आप भी एक वर्सिटैलिटी गेन कर पाओ अलॉन्ग विद द चेंजिंग टाइम। अगर आपको कभी कोई बोल दी कि मुझे एक वीडियो एडिट करना है, एनी सिचुएशन कैन कम ओवर यू, यू मस्ट बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन एंड गो विथ इट। ऑब्वियसली आपको पढ़ाई तो करनी ही है, आपको अच्छे मार्क्स तो लाने ही हैं, अच्छा CGPA स्कोर करना है, बट अलॉन्ग विद दैट you need to keep investing your considerable amount of time in gaining the new skills, learning about new things, and I think that matters equally because अगर आप simply अपने surrounding देखो तो you will easily found कि everyone is studying out there. Okay, आपको आपके कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, every engineering student is studying because सबको डिग्री चाहिए ही चाहिए। everyone wants to finish their degree within the minimum stipulated time। तो पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, CGPA सब ला रहे हैं, एंड आई थिंक एक डिसेंट लेवल के ऊपर अगर आपका CGPA आ रहा है तो देन दैट्स ऑल। बट समथिंग दैट मैटर्स इज नॉट what the extra efforts you are putting, what are the extra things you are doing, that matters the most, and that's the main differentiating factor between you and the other people because पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, मार्क सभी लेकर आ रहे हैं, बट what difference you are making, what are the extra things you are doing, that matters the most. And I think you need to keep making difference because it's a quite a famous quote that ki you can't expect extraordinary result by doing ordinary things. So the first skill that I would like to recommend all of you, and I think every student must put their efforts and must invest their time in gaining that skill. And not only for the engineering students, I think each and every student must gain that skill, must invest their time in gaining that skill. And the skill I am talking about is the communication skill. Yes,
Definitely, every student must invest the considerable amount of time in gaining the right communication skills, because in the further part of your life आपकी आगे आने वाले प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। बेसिकली इन द फर्दर पार्ट ऑफ योर लाइफ आप कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो सकती है। सो डेफिनेटली every student must have the right communication skills। आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप किसी से कैसे बात करते हो, किसी को कैसे ट्रीट करते हो, हाउ यू रिएक्ट टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, all these things matters a lot in your further professional life। So definitely you need to have the proper communication skills to have a really successful professional life। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आई एम क्वाइट गुड एट माई कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे से आती है, मैं तो लोगों से काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर लेता हूँ, मैं तो काफ़ी अच्छी बातें कर लेता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है। इफ़ यू थिंक ऑल दिस एंड यू थिंक यू आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू टेल यू दैट यू आर मिस्टेकिंग। काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हो, बिकॉज आई थिंक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आई थिंक देयर इज स्टिल चांस ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सो नेवर थिंक्स लाइक दैट कि मुझे तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज कीप योर माइंड ओपन फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस। इफ़ यू थिंक कि मुझे तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, I can communicate with the people in English, and if you think that as the good communication skill, first of all, I would like to tell you that you are getting the definition completely wrong. Communication is a skill and English is a language. Communication skills are irrespective of any language. You can have the good communication skills in any of the language. It need not to be only the English. So first of all, you need to get that thought out of your mind that if you are good at English, you are good at communication skills. It need not to be the fact. And in the today's world of marketing and advertising, communication skills are much more valued than anything other. Definitely everyone needs to have the decent communication skills. Everyone need to have some basic hold over the communication skills. But if someone can have some really great communication skills, then that can prove really good for that person. A person with a good communication skills is welcomed everywhere. You can have lots of opportunities. So that's why I think every student must invest their time in gaining and learning the communication skills. And for that, obviously, you can find lots of stuff, lots of tutorials out there on YouTube and even on some other platforms too. But a book which I personally found really helpful to improve the communication skills is a book called as How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. That book is just awesome for you to learn the communication skills. जैसे ही आप उस बुक को पढ़ना शुरू करोगे एंड जैसे ही आप उन सारी चीज़ों को खुद के साथ रिलेट करना शुरू करोगे, यू विल रियलाइज दैट यू वॉज नॉट रियली गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी गलतियाँ या फिर जो भी फ्लॉज आपके अंदर है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपको रियलाइज होने लग जाएगी एंड इट ऑल्सो टेल्स यू अ रियली गुड वे टू इम्प्रूव दैम। So that book can prove really helpful for anyone who wants to get hold over their communication skills. Not only that book, but there are several other platforms to help you with your communication skills, so you can refer any one of them. But something you need to keep in your mind is that you need to improve your communication skills, because communication skills can change your world. The next skill that I think every engineering student should learn is the skill of coding. जो स्टूडेंट सी एस एंड आई टी ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छे लेवल तक की कोडिंग सीख ही लेते हैं। बट फॉर द नॉन सी एस स्टूडेंट, आई थिंक उन्हें भी कोडिंग सीखनी चाहिए। डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में हमें कोडिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते ही है जो कि काफ़ी इंट्रोडक्टरी लेवल के होते हैं। बट आई थिंक even after that, in some way you need to keep yourself in touch with coding.
आपको किसी तरह से खुद को कोडिंग के साथ इन्वॉल्व रखना है। डेफिनेटली नॉट टू मच, बट आई थिंक एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक डिसेंट लेवल तक की कोडिंग आनी ही चाहिए। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। फर्स्ट ईयर में जो इंट्रोडक्टरी लेवल के कोर्सेज होते हैं, उनके बाद भी आपको अपनी कोडिंग जर्नी को बिल्कुल स्टॉप ना करते हुए थोड़ा आगे लेके जाना होता है। डेफिनेटली आपको ईजीली काफ़ी सारे रिसोर्सेज एंड काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। वो फ्री हो सकते हैं या फिर पेड भी हो सकते हैं, बट समथिंग यू नीड टू कीप डूइंग इज टू लर्न कोडिंग टू सम डिसेंट लेवल। फर्स्ट ईयर में आपको जिस लेवल तक की कोडिंग पढ़ाई जा सकती है, आई थिंक ये उससे थोड़े अच्छे लेवल की कोडिंग अगर आपको आती है, दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर यू इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच। ये मैटर नहीं करता कि आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हो, बट I think every engineer should have a decent level of coding knowledge. So please do keep yourself involved in coding and you need to keep a target कि आपको एक decent level तक की coding तो सीखनी ही है। एंड मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस रिलेटेड टू कोडिंग प्लेटफॉर्म्स बना चुका हूँ। सो डेफिनेटली यू कैन हैव द लुक ओवर देम। Now, the next skill that I would like to recommend all of you is, since in today's world the value of content creation is continuously increasing, people are watching the content as never before. For various companies want the content creators for their marketing purposes, and for various purposes content creation is being used. And I think the value of content creation or the field of content creation as a profession is continuously expanding and nourishing in much better way as never before. So I think it creates a need for each one of us to have some decent knowledge about the content creation. Means you need not to be actually content creator, but how to edit videos and some basic tips, some basic knowledge about graphic designing can help you a lot at various aspects. I actually cannot say at what aspect or at what incident these skills will be helpful to you, but I can assure you that you will never regret if you learn these skills. एंड मैं ये skills आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी बड़े लोगों को ये रिकमेंड करते हुए देखा है कि हर किसी को एक डिसेंट लेवल तक की वीडियो एडिटिंग एंड एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना ही चाहिए। बेसिकली अगर मैं थोड़ा प्रिसाइजली कहूँ तो नॉट द होल फील्ड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपको एक डिसेंट होल्ड ओवर द फोटोशॉप आपको होना चाहिए। आई होप यू नो व्हाट्स द फोटोशॉप इज, दैट्स समथिंग लाइक टू बी यू शुड नो इन टूडेज वर्ल्ड। आपको एक डिसेंट लेवल तक की वीडियो एडिटिंग एंड सम इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फोटोशॉप आना ही चाहिए। आपकी नीड आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बेटर वे में टीच कर सकती है ये सारी चीज़ें। सो वेन एवर यू नीड यू विल लर्न देम इन अ बेटर वे, बट आई थिंक फॉर नाउ something you need to do is just learn the basics of video editing, learn some basics of graphic designing. And I'm again saying that that's not my personal recommendation. I had seen some really big YouTubers, some really great people recommending all these things for all of us. So finally, summarizing all of today's video, what you finally have to do is gain some skills that can really help you in the further part of your life. And the first and one of the most important skill that I think everyone must put their efforts to learn and put their efforts to improve that skill is the communication skill. I hope कि मैंने in the beginning of the video जितना भी explain किया, that's enough for you to understand the importance of the communication skills. And after that you need to learn the coding to some really decent level, and after that you need to learn the video editing and graphic designing, basically Photoshop, to a decent level. That's again is considered to be quite decent for now. सो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग लाइफ की जर्नी स्टार्ट की है, आई थिंक जो भी अपने अकेडमिक्स के बाहर कुछ नया करना चाहते हैं, हु एवर वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आउट ऑफ देयर अकेडमिक्स, they can definitely start with these skills. These skills are going to definitely help you a lot in further part of your life and you will never regret having learned them. So that's all from my side in the today's video. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।